Alright, people. Good evening. Welcome to your own Akash Baiju's Neat channel. We are meeting for another lesson on this amazing, super important, super scoring chapter of sexual reproduction in angiosperms. आज है 5वीं क्लास. राइट, आई होप यू हैव बीन रेगुलर टू द क्लासेस और क्लास के बाद आप अपनी ब्यूटिफुल द बाइबल लाइक वर्थ वर्शिपिंग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, क्लास के नोट्स भी रेफर कर रहे हो और क्वेश्चंस जो हम टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करते हैं या फिर हम डीपीपीज देते हैं वो भी सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीट की तैयारी में यही डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं. आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल माई ब्यूटिफुल स्टूडेंट्स. हरिओम कुमार, प्रणाम सर. ओके, कुछ तो था उसने लिखा था. डॉक्टर संजय एमबीबीएस. डॉक्टर उजेर ने नाम चेंज कर लिया है. भाई डॉक्टर लगा लिया नाम के आगे. मैं तो लगा हुआ है तो भी नहीं लिखती हूँ कई बार, है ना. सो गुड. इफ यू वांट टू फील द ट्यून ऑफ इट. रितिका, वेलकम टू द क्लास. गणेश, गुड इवनिंग बच्चों. आयशा, विनोद कपूर, हेलो बेटा. सचिन, गुड इवनिंग. गुड टू सी यू रेगुलरली इन द क्लासेस. डॉक्टर अदिति सिंह, गुड इवनिंग. बायोलॉजिस्ट शाइमा, संजना, गौरी, आस्था, good evening beta. I'm absolutely fine, thank you. Prem is always ready for the class, so nice to know. Gauri, okay. Biologist today, ma'am, first class. Biologist, so good to have you. Welcome to the family of Akash Baiju's Neat. You have taken a very good decision to be a part of these classes. अब सिर्फ इतना करना है. I would suggest please watch the 4 classes that you have missed. उसमें हमने बहुत अच्छे से we have done this chapter. So what do? You go to the playlist. Yeah, Saturday, Sunday is here. And Sunday especially for you guys if you don't have school. और उसको 2x पर 1.5x पर देख डालो. And whatever I've written उसको साथ में लिख डालो. गुड इवनिंग तौहीद अख्तर. इट्स योर फर्स्ट क्लास. सेम गोज फॉर यू माय डियर. तौहीद बेटा पुरानी क्लासेस देख लेना, सो दैट यू फील कंफर्टेबल इन द अपकमिंग क्लासेस. करोगे ऐसा? बताओ, देख लोगे ना क्लासेस? नहीं तो मुझे चिंता रहेगी कि तौहीद ने क्लास नहीं देखी है, बायोलॉजिस्ट एनके ने नहीं देखी है. अच्छा, प्लीज शेयर द सेशन, है ना, सो दैट जैसे तौहीद आज ज्वाइन कर रहा है, बायोलॉजिस्ट इज ज्वाइनिंग द क्लास टुडे, तो हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे सिंसेरली इस एम से जुड़े हैं टू बिकम डॉक्टर्स इन दिस कंट्री, है ना, उनको फ़ायदा होना चाहिए. तो मेरी तो वही कोशिश है दिन रात की मैक्सिमम डॉक्टर्स निकले हमारे स्टूडेंट्स में से. तो शेयर द सेशन बिकॉज इफ यू डू गुड हैपन्स टू यू. लाइक द सेशन, है ना. इफ यू लाइक द सेशन इट विल डेफिनेटली बी सजेस्टेड टू अदर पीपल टू वॉच द सेशन. सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज दिस चैनल इज नॉट ओनली अबाउट कंप्लीशन ऑफ सिलेबस कि मैं आई और मैंने चैप्टर पढ़ाया और चली गई. मुझे पता है कि कब आप लोग डीमोटिवेट हो सकते हो, कब आप लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, कब आप लोगों को टिप्स की ज़रूरत हो सकती है. तो वो सेशंस भी हैं. मुझे ये भी पता है कि कब मुझे आपके साथ सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, मॉक टेस्ट सीरीज डिस्कस करनी है. जब भी जिस भी पढ़ाव पर आपको ज़रूरत होगी, आकाश बाइजूस टीम इज़ देयर फॉर you like anything. Yeah, so you don't want to miss all these efforts. Hence, subscribe to the channel. Let's start the class beautifully. People who are new to the class, pen and paper is all I need. You, pen, paper. When I say you, I don't want you physically in the class. I want you पूरा तन मन धन सब लगाकर with the heart and soul into the class. Gaurav Sharma, I read your message beta. Good evening. Dr. Aditi, yes ma'am. चलो start करें. What should I do for notes? Telegram is not working in our country. Dr. Uzair, where are you bete? You're in Kashmir, right? अच्छा उज़ैर, do one thing. There's no problem. मेरे बच्चे आपको notes मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में. टेलीग्राम इज नॉट वर्किंग इन योर कंट्री. ओके, लेट मी स्पीक टू द टीम व्हाट वी कैन डू फॉर यू. मे बी सेंड यू पर्सनली समहाउ. सुन तेलुगु बेटा, लॉन्ग टाइम आई बीन मिसिंग यू. आई नो, आई सीन यू इन वन ऑफ माई क्लासेस. Ritika, you missed my last class. Please don't do that.
Please watch the class. It's very simple. कुछ 50-55 मिनट की क्लास है रितिका. Watch it off यार. Finish it off. कुछ भी रहना नहीं चाहिए. अच्छा, Dr. Uzair, you are in England. Okay, Telegram is not working there. Cool, let me speak to the team. We'll try to help you the maximum. Good to have you in the class. Shovik, चलो start करते हैं. Keep sharing the session. Uzair, are you sharing the session with other people? Are you? Neetu, hello beta. Gauri, ma'am, you are Telugu. नहीं बेटा, I'm not Telugu. ओके देखो बच्चों, किसी भी रीजन से अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो, सो यू इट्स नॉट समथिंग एंड ऑफ द वर्ल्ड कि मेरी क्लास मिस हो गई है. तो इट्स नॉट लाइक अ फिजिकल लेक्चर, ऑफलाइन लेक्चर. प्लीज वॉच द प्रीवियस क्लास and then come to the next class. That is okay. And if you have doubts, you can post them in the comment section. Uzair, your lectures are helpful for MCAT. Okay, thank you. Good to know. So you can share the session with other aspirants as well. The idea is to help maximum people. Akash Byju's stands for education for everybody, globally. है ना? NEET is just one of the exams. चलो नमस्ते, अब मैं पढ़ाना शुरू करूं. बातें बहुत करते हो तुम, है ना? तुम्हारा बस चले तो मुझे यहीं रोक लो, पढ़ाने ही ना दो. पढ़ ले थोड़ा सा, फिर मैं आऊंगी वापस, मिलूंगी आपसे. भाई पिछली क्लास में हमने पॉलिनेशन पढ़ा था. वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस ब्यूटिफुल प्रोसेस. आई सेड दिस इज एन एक्सट्रीमली क्रूशियल प्रोसेस इन द एक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. Yeah, because both the gametes, whether it is pollen grain carrying the male gametes or the egg lying in the embryo sac, both are immotile. वो move नहीं कर सकते हैं. Hence we need the very special process of pollination. We also understood that pollination can be of 3 major categories. Actually 2 categories. Yeah, one is self and one is cross. Now this categorization speaks for the genetics of it. Genetically there is self-pollination, yeah, and cross-pollination is genetic recombination, yeah. But ecologically, if I speak about the categorization ecologically, I explained this to you in the last class, or functionally, है ना? Functionally, then I have 3 categories. Because in autogamy and geitonogamy, things change. In autogamy, I don't need a transferring agent, a pollinator, so to say. But when it comes geitonogamy, although the flower is on the same plant, we saw with the help of beautiful animations. Those of you who have missed the last class, it was a very special class. Please watch it. With the help of amazing visuals, we have understood the process of pollination. So please don't miss it. Geitonogamy requires the transfer as well. Xenogamy is entirely dur. There is pollination between 2 different plants. Now people, there is a term called allogamy, I'm going outside NCERT because, like I said, this is education for everything. It can help you with any kind of exam where botany is involved. Allogamy is geitono plus xeno. What is allogamy? Allogamy term is a broader term which takes care of geitonogamy and the foreign pollination xenogamy. In the last class, boys and girls, we understood the process of anemophily. What is anemophily? It is the wind pollination. And for the NEET exam, or for any exam you are going to appear, the examiner's mind is sort of readable, I tell you. कोई भी एग्जाम हो तो अगर आपने एग्जामिनर का दिमाग पढ़ लिया, you're almost there. So anemophily में पूछना क्या वो चाहेगा as a question? What are the features or characteristic of the involved plants and the pollen grain? Why pollen grain? Because pollen grains are the ones who have to cover the journey, who have to travel to the female part. Female part आराम से बैठी है. Egg is waiting.
Pollen grains have to be brought to the stigma. So anemophily के जो characteristics हैं Ritika, people Astha, anybody who has missed the class, people who are new to the class. So quickly, I'm not saying if you don't have time, you're very busy people, you're engaged in 100 different things, I understand. Important points आप लिख लें. What are the features of the flower and the pollen grain? So we'll follow the same trend in other modes. When I talk about abiotic or non-living agents, my commonest sense tells me that in this case, I don't need to attract the pollinators. हवा और पानी को आप रिश्वत नहीं दे सकते, आपको फंसाना नहीं पड़ेगा कि आओ आओ हमारे पास आओ. So these flowers, both in hydrophily, both in anemophily, which are, I repeat, primitive modes of pollination, they are not very much liked or followed by the plants because they are extremely wasteful processes. They are, so to say, I love a term for it, they are the non-directional, especially anemophily. कोई direction ही नहीं है भाई, हवा कहीं पे भी लहराएगी. So there's a lot of wastage of pollen grains, non-directional, wasteful processes. Now what happens in hydrophily? The first question is the rarest mode of pollination. When water is carrying the pollen grains. Okay, it is as rare as this. It is seen in only 30 genera of monocots. This is a question if you are writing 30 count karke genera of monocots. The examples that my children have to remember, वो example जो आपको याद रखने हैं, ये मैं extra नहीं दे रही हूँ, NCERT में mentioned है. Vallisneria, Hydrilla and Zostera. One more I'll give you, Ceratophyllum. With me on this? Zostera से हो ना हो questions बहुत आ रहे हैं. भाई अब है एग्जामिनर का फेवरेट तो है ना. What to do? So Vallisneria, Hydrilla, Zostera and Ceratophyllum, these plants show hydrophily. जो बाकी aquatic plants है, most of the aquatic plants यार, उनमें या तो insect pollination होगी mostly. Wind pollination भी करवा सकते हो, लेकिन hydrophily नहीं होगी क्योंकि सिर्फ वो aquatic plants हैं. अब सोच के देखो, when we speak about the primitive members of plant kingdom, algae, bryophytes, pteridophytes. How was the male gamete, the anthrazoid, traveling to the egg? Through a film of water. So, water or hydrophily, not exactly, not literally hydrophily in that case, was actually happening in the lower forms of plants. Okay? And this feature remained in 30 genera of monocotyledons. Once again, like I say in every class, people who are new to the class, if you want to prepare NEET exam the most effortlessly, seamlessly, and make your selection a surety and not a chance factor. क्या पता selection होगी नहीं होगी. You have to stick yourself, you have to hold the hand of somebody who has had the experience of generating ranks since years. And who other than Akash Byju's, right? So here if you're associated with Akash Byju's, the different tools and techniques that we have, these are time-tested tools that we know make your selection sure. भाई होनी ही है. ऐसा करके हो नहीं सकता कि selection ना हो. Whether you label yourself as a good student, not a good student, bad student, whatever. These tools are not based on the categorization of students. That means they are going to work for anybody. तो ये काफी scientifically ये जो tools और techniques आकाश बायजूस बनाता है, I want to tell you, whatever you try, आपको लग सकता है यार ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? Nobody else is doing it. What is the use of? Maybe your limited mind cannot fathom. That is the thing which happens with change. जब भी हमें कोई नई चीज मिलती है, वो कितनी भी अच्छी हो, there's a doubt in our mind. We have a tendency to doubt good things or anything which is new. And that is why
क्योंकि शुरू में ऐसा हो सकता है. It is a new method of learning. It goes against the very idea, the hue and cry of NEET का एग्जाम, दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम, तुम्हारी सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकती. क्या? It is going to break all those ideas. So people, that is why 14 days of trial, not 1, not 2, not 3, 14 days के लिए, sink into it. Yeah? Keep swimming into the idea of learning effortlessly. कि भाई कोई उदासी नहीं आ रही है पढ़ाई करते हुए. So explore this app for 14 days, share your experience, download the app from the link given in the description box, and you are going to feel the change. Yeah? You can book the counseling session if there's any problem related to syllabus, related to anything. You have counselors and mentors. You can book the session through the app. You can book trial classes with your favorite teachers, not your favorite only, the country's favorite teachers who have the maximum experience in taking out first ranks in both JEE and NEET. Alright people, so now like we always do, you can look at the screen, something is happening. Yeah, because what you see is what you remember. This is the example of Wallisan area. This is Wallisan area. क्या दिख रहा है इसमें? What can you see in Wallisan area? Submerged है, पानी में submerged plant है, पानी में डूबा हुआ है. But during the act of reproduction के टाइम जब pollination की बारी आती है, sexual maturity आती है, the female flowers grow long stalks and travel to the surface of water. Why are they doing that? So that the male flowers or the pollen grains can travel to the female flowers. This phenomenon where pollination is happening on the surface of water, उसके बाद वापस जाएगा नीचे. उसकी आदत तो नीचे ही रहने की है, submerged होने की ही है, लेकिन सिर्फ pollination के लिए वो ऊपर आया था. This phenomenon, people, this is very much given in NCERT. But only one term is not given, epihydrophily. Epihydrophily. Epi is upon. In biology, epi means upon, upar. Upar. Okay? Hydrophily. It is happening on the surface of the water. Now, another phenomenon which is seen in Zostera. Okay, Zostera or sea grasses. Frequently asked question. इसमें पानी के नीचे होगी, not on the surface of water. So that kind of hydrophily is called hypohydrophily. Hypohydrophily. We have to learn the examples and the terms. Hypo in biology means below, at the base, नीचे. Good? Happy? Done? Now people, the most important question very close to my heart. As an examiner, as a teacher, what are the features of pollen grains? Their physical environment is not that easy. They are going to float in water. उनके पास काम बहुत है. They have to live in water and travel to the female. So, if the pollen grain is involved in hypohydrophily especially, it is going to be ribbon-like. Where is it? Where is it? Yeah. There you go. Question. Now, choice में जरूरी नहीं है ये mentioned होगा कि पानी के नीचे ऊपर. ये तो मैं तुम्हें common sense लगाने के लिए सिखा रही हूँ कि भाई नीचे, surface के नीचे, water surface, below the water surface, to face the currents, to not be destroyed by the water currents, the pollen grains are in the form of a ribbon. With me? So that they can face the water currents. Pollen grains, irrespective whether they are pollinating on the surface of the water, below the surface of the water, will be covered by mucilage. क्यों भाई? Algae was covered by mucilage. Let's see the chat box. Again, to not get
ड्राउंड इन वाटर, तैरने के लिए, डिस्ट्रॉय ना होने के लिए. Mucilage covering is a characteristic feature of pollen grains in hydrophily. Thank you, Zair. Okay? Now, people, if pollen grains are involved in epihydrophily, they will be spherical in structure. Spherical in structure. क्यों? भाई फिजिक्स लगा लो थोड़ी सी, तुम तो लगा लो कम से कम. क्यों होगा ऐसा? जूही, I'll come to that. One thing at a time, बेटा. मोनित हिंदी मीडियम में अवेलेबल करा दो बेटा. इन क्लासेस में ना जो भी मैं पढ़ाती हूँ मोनित, जो इंग्लिश में बोल रही हूँ ना वो हिंदी में बोल चुकी होती हूँ या बोलने वाली हूँ. आप कुछ मिस नहीं कर रहे हो. सच्ची बोल रही हूँ मैं. एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना क्लास अटेंड करने के बाद. मोनित, आपका नाम बहुत प्यारा है. क्लास अटेंड करने के बाद एनसीईआरटी खोलना, सब कुछ चमकेगा. क्यों? क्योंकि वो मैंने आपकी भाषा में आपको समझाया हुआ है. और बेटा जो सब्जेक्ट है वो तो इंग्लिश में ही है ना, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि हम पूरी तरह से इंग्लिश को ना बोलें. मुझे नहीं पढ़ना, मैं नहीं सुन रहा कुछ इंग्लिश में, क्योंकि यार सब्जेक्ट तो इंग्लिश में, मतलब बायो में तो टर्म्स वगैरह सब इंग्लिश में ही आएंगी ना, अगर आप नीट का पेपर भी हिंदी में चूज कर लेते हो. तो थोड़ा टाइम, एक बार मेरी क्लासेस में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. आई एनीवे लव हिंदी अ लॉट, मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है. सुष्मिता, गुड इवनिंग. सुष्मिता प्लीज लेट मत आया करो. हाँ, आई कीप मिसिंग यू गाइज देन. चलो, वी आर गुड. इसमें फिजिक्स लगाई मैंने, जितनी आती है फिजिक्स लगा लो, मुझे तो नहीं आती. सो दे आर स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर टू कीप फ्लोटिंग. यार पीपल आर सेइंग सरफेस टेंशन, बॉयंसी, वो तुम्हारी दुनिया है. टू कीप फ्लोटिंग. अच्छा, एक और वर्ड अगर सवाल आ जाए दुनिया के किसी भी पेपर में, अनवेटेबल. अनवेटेबल पॉलन ग्रेन्स, इनको गीला नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये गीले हो गए, अगर पॉलन ग्रेन्स गीले हो गए, पानी एब्जॉर्ब करेंगे, डूब जाएंगे. हेंस दे आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज. ओके, और इनमें एक्साइन इज नॉट वेल डेवलप्ड और एब्सेंट ऑल्सो समटाइम्स. क्यों मैम, क्यों? वाई दिस पार्शियलिटी? अगेन सरफेस टेंशन का चक्कर. विद मी, घूम फिरा के यही सवाल आएंगे इसमें से, आने हैं तो. रिबन, हाँ, सब कुछ बता दिया तुम्हें, ऑल द की पॉइंट्स. आई होप यू आर राइटिंग विद मी. अगली कहानी आई बायोटिक एजेंसीज. अब प्लांट्स जब इवॉल्व कर रहे थे, प्लांट्स के पास होता है बहुत ज्यादा दिमाग, दिखाते नहीं है, होता है. उनको समझ में आया कि यार वी कांट बी डिपेंडेंट ऑन विंड एंड वाटर, क्योंकि ये तो बड़े चांस फैक्टर वाले प्रोसेस है, पानी और हवा. तो बायोटिक और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फंसाया जाना चाहिए. दे शुड बी आवर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. एनिमल किंगडम में सबसे मैक्सिमम कौन है भाई? लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंसेक्ट्स की है, आर्थ्रोपोड्स की है. प्लांट्स ने बोला यार तुम ही हो सबसे ज्यादा, छोटे हो, ज्यादा नखरे भी नहीं मारते, करते हैं काम. प्लांट्स ने इंसेक्ट्स के साथ एक डील बनाई, तुम हो सबसे ज्यादा, तुम स्पेस भी कम लेते हो, ओके, चलो दोस्ती करते हैं. मैं तुम्हें नेक्टर दूंगा, मैं तुम्हें फूड दूंगा, वो भी टेस्टी वाला. रहने के लिए जगह भी दे सकता हूं, खाने के लिए सीड्स भी दे सकता हूं, जो चाहिए. खाने के लिए पॉलन ग्रेन भी दे सकता हूं, बट यार पॉलिनेशन करवा दे प्लीज, क्योंकि अदरवाइज तो मैं एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा. और एनिमोफिली, हाइड्रोफिली में मेरा इतना खर्चा हो रहा है पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए. आई एम स्पेंडिंग सो मच टू मेक पॉलन ग्रेन्स फॉर एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली. Cool. So that is called as entomophily. देख लो, entomophily.
This is the most common method of pollination. 80% of the plants, 80% of the angiosperm, 80% बहुत ज़्यादा होता है. इतना पॉपुलर है कीड़ा साम्राज्य for pollination. Now people, suddenly the features of the flowers and the pollen grains will change. So I'm going to tell you very systematically. भागेंगे नहीं. अच्छा, Juhi said something. She always says nice things. She said lotus, water hyacinth and water lily. You know why she's saying that? She doesn't say anything without reason. क्योंकि ये previous year question है. That is why she's saying. And it is mentioned in NCERT. Okay? तो वो ये कह रही है कि ऐसा ना सोचें कि लोटस या आइकॉर्निया, भाई आइकॉर्निया बच्चों टेरर ऑफ बंगाल क्यों आया था ये दुनिया में? ब्यूटिफुल फ्लावर्स. लोटस सच अ ब्यूटिफुल फ्लावर. And water lily, such beautiful flowers. They are aquatic plants, but they do not follow hydrophily. They've given up on hydrophily. So what is happening? If they are so beautiful, why will the flowers be so beautiful? In hydrophily and hemophily, flowers don't have anything to be beautiful. They will be colorless. They'll be odorless. They don't have to attract the pollinators. So don't get confused. If the question is asked, it is entomophily mostly. Okay? Now, coming back to entomophily. Now, the common insects which take part in entomophily or pollination are these moths, butterflies. अच्छा, if you go to a garden, I would say, अगर टाइम मिले, आप लोग बहुत ही बिजी लोग हैं, टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकाल कर go for a nature's walk. It'll really calm your mind down. You know, Sunday को early morning 6 o'clock, 7 o'clock, or in the evening. Morning में you will see more birds and insects, honestly. That's my observation. Go for a nature's walk. Go to a garden. Go to a place where human intervention is less. जहाँ पे लोग pollution कम है, क्योंकि वहाँ nature ज़्यादा होगी. You will see all of this happening. और इनमें से भी सबसे कॉमन आपको मिलेंगे बीज. तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर्स, हनी बी स्पेशली. इनफैक्ट बीज के पास तो पॉलन बास्केट्स होती हैं. पॉलन बास्केट्स होती हैं, पीछे बास्केट लेकर कलेक्ट करती रहती है पॉलन. ओके, सो बीटल्स, बटरफ्लाईज, मॉथ्स, दीज आर द कॉमन इंसेक्ट्स इन्वॉल्व. अच्छा, what are the baits? What are the rewards? Reward system is the deal, yaar. Reward system is a characteristic feature in entomophily, or in fact I should say biotic mode of pollination. Reward which the plant gives to the insect is nectar, edible pollen grains और shelter. Shelter में एक थोड़ी सी कहानी ज्यादा है. कभी कभी इंसेक्ट अपने लिए शेल्टर नहीं मांगता है, मुझे नहीं रहना है, लेकिन किसके लिए मांगता है? बच्चों के लिए. Every living species has this protective tendency for the young ones. उसको बोलते हैं oviposition. Oviposition. डरना मत, बहुत सिंपल बातें बता रही हूँ, एक्स्ट्रा बता रही हूँ. yes. Up to lay their eggs. They are like, ठीक है, हम जा रहे हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रख लेना, because egg में larva will develop. When the larva comes out as the baby insect, and then the parent is like, अच्छा ठीक है. Sometimes the larvae are fed by the seeds, nectar, pollen grains of the flower. So this is very important for the insect. इनकी deal ही यही हुई. अब I'm going to relate it to a concept in ecology. If anybody in this class has studied ecology already, this is a mutualistic relationship, a very strong association in nature. Mutualistic relationship, both species are benefited. This reminds me, Saturday evening, yeah, I am going to be taking a class where I will read NCERT line by line, every line of NCERT, only on population interactions of ecology, because that is a short question. If you are a 2023 also, you can study it. If you're a 2022 aspirant, that class is imperative, that class is crucial, that class will fetch you
MCQ, at least minimum one MCQ in your paper. So spread that, share the link of the class with your seniors and be a part of that class. Okay? चलो आगे चलते हैं. B, most common pollinator. अच्छा, ऐसा भी देखा गया है कि the color preference of the insects, वो भी देखा गया है. I'll tell you. So first of all, these flowers have to show themselves. They have to sell themselves. They have to makeup लगाना पड़ता है इनको. It's as simple as that. So they are showy petals, colored petals, colorful, very brightly colored flowers. They will be odor. They will have a smell, a particular smell. लेकिन it's not always a pleasant smell. Because some insects like beetles for example, they are attracted to foul smell. तो ज़रूरी नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म की मर्जी है ना. ज़रूरी नहीं है अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, आपको करेला पसंद है तो सबको करेला पसंद है. For other people it could be so bitter. So that way. So showy and brightly colored. अच्छा, किसी किसी plant में petals are not colored and showy. So other parts, the plant is so determined to cause entomophily. The plant knows, understands कि बाकी parts फिर showy बन जाते हैं. Okay? For example, a sepal in Missinda becomes showy. Stamens in Mimosa. अभी मुझे यही अनगिनत एग्जाम्पल है. देखो, बायो इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, आपके सिलेबस में खास नहीं है, जानना जरूरी है. ओके, सो वेरी शोई एंड ब्राइटली कलर्ड. और ऐसा भी करते हैं प्लांट्स की इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं टू ग्रुप टुगेदर. वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू शो देमसेल्व्स एज अ बिग फ्लावर. फॉर एग्जाम्पल, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इन सनफ्लावर. अब ये 11th क्लास में पढ़ते हो तुम, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इन सनफ्लावर. सब लोग नहीं पढ़ते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड सनफ्लावर इज अ लॉट ऑफ flowers together, forming a cluster or inflorescence, and that middle part is the receptacle. कुछ flowers इतने मदद करते हैं, इतना VIP ट्रीटमेंट देते हैं इंसेक्ट्स को, that they will prepare a landing platform. है ना, जैसे रेड कार्पेट होता है ना ऑस्कर्स में, अवार्ड फंक्शंस में, तो वैसे एक कार्पेट बिछा के रखते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म. एग्जाम्पल इज वायोला. वायोला का फ्लावर आई टोल्ड यू इट्स वेरी कॉमन पैंसी, वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर, ऑर्नामेंटल फ्लावर, कॉमन पैंसी. उसमें ना फ्लावर में एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है और मार्किंग्स होती हैं. देयर आर मार्किंग्स ऑन द फ्लावर टू गाइड द इंसेक्ट कि यहाँ जाएगा. इफ यू गो थ्रू दिस डोर तो तेरे को नेक्टर मिलेगा, तेरे को पॉलन ग्रेन मिलेगा. These are all attracting mechanisms. So landing platform or the nectar guides. Those markings are there, or those some guiding points are there so that the insect knows where to go. For example, mimulus. ये याद कर लो, बहुत है. This is बहुत है. मानित, समझ में आ रही है क्लास? अच्छा, अब जैसा कि मैंने कहा, जो स्मेल प्रोड्यूस होती है दैट इज प्लेजेंट इन सम फ्लावर्स. फॉर एग्जाम्पल जैस्मिनम, जैस्मिन. लेकिन रेफ्लेसिया, ये मेरा बड़ा ही फेवरेट एग्जाम्पल है. रेफ्लेसिया प्रोड्यूसेस द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स. हो, गंदी रॉटन एग्स की स्मेल एक्चुअली बहुत गंदी होती है. या सो फाउल ऑर्डर इन रेफ्लेसिया, like I told you, attracts the carrion flies and beetles. I remember carrion flies. Nobody will ask you, just letting you know. This is if you plan to study, if you plan to do masters in botany. You know, one of my students years back, he hated botany. When I started teaching the first class itself, he was the topper of this batch, and he started saying, ma'am, I don't want to sit in botany class. It's okay, I'm intelligent enough. He was the topper in physics also, chemistry also. I'll manage botany, but I don't want to, I just don't like this subject. And do you know, he ended up doing MSc in botany. Long story. Yeah. So you don't know what you love or what you could love
in so much of subjects and knowledge. तो सब कुछ explore करना चाहिए, सारे subjects, और mind में ये रखना चाहिए. Yeah, that my aptitude could be to become an astronomer, to become a painter, to become a dancer. Anything can happen. Cool people. So Rafflesia से question आता है. This is a, I'm not giving you extra question. This is an important question. Carrion flies you can skip. उसके बाद there will be, अच्छा nectar बहुत abundant होगा. They will produce abundant rich nectar. Tasty nectar. Most of these flowers will have nectar glands. And pollen grains are also edible. For example, magnolia. सब में नहीं होंगे. अच्छा, stamens are not exerted like anemophily. Stamens छुपे होते हैं अंदर. You know why? Any idea? See, without why, I'm not going to let you go. No mugging up in my class. Let's see the chat box. Anemophily में मैम ने पढ़ाया पिछली क्लास में कि stamens बाहर ऐसे वेट कर रहे होते हैं दरवाजे पे. Exerted stamens, exposed stamens. और यहाँ पर छुपे हुए हैं अंदर. Why? Well, they are inserted stamens in petunia is one of the flowers next to the nectar glands. इंसेक्ट स्टेमन से मिलने नहीं आ रहा है, इंसेक्ट नेक्टर के लालच से आ रहा है. तो स्टेमन कोशिश करते हैं कि नेक्टर ग्लैंड्स के पास छुपे रहें. इंसर्टेड, कि जब वो नेक्टर पीने के लिए आ रहा है, टेस्टिंग सेरेमनी, तो मैं पॉलन ग्रेन इसकी बैक पर छोड़ दूंगा. सो द पॉलन ग्रेन स्टिक टू द बैक ऑफ द इंसेक्ट एज द इंसेक्ट गोज इनटू द फ्लावर फॉर द लालच, फॉर द ग्रीड ऑफ नेक्टर. उसी तरह स्टिग्मा इन लिलीज आर स्टिकी. क्यों बनेंगे स्टिग्मा स्टिकी? So that the pollen grains from the insect can stick to the stigma. These are all methods to make sure that pollination happens. अच्छा, pollen grains की जो variety, pollen grains की जो characteristic है, they will have a spiny exine. Okay? They will have a sticky surface. And they will have pollen kit. Pollen kit is secreted by tapetum, first class of this chapter. किस चीज से बनी होती है? लिपिड से बनी होती है. ऑयली सब्सटेंस उसको कोट कर देते हैं. क्यों? सो दैट इट स्टिक्स टू द बैक ऑफ द इंसेक्ट, बॉडी ऑफ द इंसेक्ट. सो दिस इज अ वेरी फेयर नाइस क्वेश्चन. विद मी ऑन दिस. स्पाइनी, हैवी, सराउंडेड बाय पॉलन किट. खुश संपन्न जिंदगी. अच्छा, ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. एमोर्फोफैलस इज अ 6 feet टॉल फ्लावर. भाई 6 feet का इंसान ही अच्छा खासा लंबा होता है. इस फ्लावर, इट इज द लॉन्गेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. सॉरी, नॉट लॉन्गेस्ट, क्या ना, मैं भी ना. टॉलेस्ट फ्लावर in the science world is Amorphophallus. ये प्लांट ओवी पोजीशन के लिए शेल्टर देता है. ये इतना बड़ा है, यहां पर इंसेक्ट्स आकर अपने एग्स को रख देते हैं. एग लेइंग, ओवी पोजीशन. विद मी ऑन दिस. अच्छा, मैं एक चीज बोल रही थी ना, कलर प्रेफरेंस. देखो, मॉथ्स यूजुअली आप देखोगे, आई रियली वॉन्ट यू टू टेक अ नेचर्स वॉक, बिकॉज वेन यू सी दीज थिंग्स ना, अगर मैं गई कहीं पे और मुझे मिल गए कीड़े, इतने नेचर की प्लेसेस मिलती नहीं. आई रिमेन इन द हार्ट ऑफ द सिटी, बट इफ आई गो आई विल शूट इट एंड सेंड इट टू यू ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. बट अपने आप जाओगे तो वैसी कोई बात ही नहीं है. मॉथ्स आर अट्रैक्टेड टू व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स. Okay, and bees are attracted to particularly yellow colored flowers or purple colored flowers like me. And butterflies are attracted to red colored flowers. With me? This is what is usually seen.
बिकॉज बीज को रेड कलर्ड फ्लावर काला दिखता है, सो इट नेवर गोज टू द रेड कलर्ड फ्लावर. ओके, अच्छा, उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एंटोमोफिली, पॉइंट नंबर 1 इज म्यूचुअलिज्म. देखो, एक होती है फ्रेंडशिप जिसमें you're like, okay, I'm good friends with this person, we are close because you know this person, I explain them, I give them chemistry के notes and this person gives me botany के notes, for example. लेकिन एक फ्रेंडशिप ऐसी है कि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकती, इसके बिना रह ही नहीं सकता. That is called as obligatory mutualism. Okay, some of you must have heard the word obligatory. Obligatory anaerobes, facultative anaerobes. Obligatory मतलब जरूरी है, I'll die without this organism. तो एंटोमोफिली में कभी कभी प्लांट और ऑर्गेनिज्म में ऐसा रिश्ता देखा गया कि लाइफ साइकिल कुड नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट ईच अदर, एंड दिस हैपेंस ओइंग टू को एवोल्यूशन. बेटा, मैंने रेड में कुछ लिखा ही नहीं है वो तो मेरा अपना था लिखा हुआ कुछ, आई वाज स्क्रिबलिंग. अभी मैंने बताया ही नहीं है यशवंत. इंपॉर्टेंट बात के बीच में सुनो ध्यान से. मैम ये नहीं दिख रहा है, मैम ये नहीं हो रहा है, मैम हवा चल रही है. इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूं ना, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूं. कोई भी आप कहीं पे भी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, फिर रटते रह जाओगे, और रटोगे तो फिर एक दिन थक जाओगे. Then you feel that exhaustion, the tiredness. I don't want to do this, yaar. This is so difficult. NEET ka exam is so difficult. It's because we have a wrong technique to study. So हुआ क्या कि when the plant and the insect realized कि यार ये तो बड़ा अच्छा रिश्ता है, ये तो बड़ा अच्छा स्कीम है, तो इंसेक्ट ने कहा कि मेरे eggs will hatch only inside you. The life cycle, the hatching of the eggs, the coming out of the larva developing into the young insects will only happen in you, nobody else. And the plant said, I will not let anybody pollinate me except you. जब इस तरह का रिश्ता, क्लोज रिलेशनशिप हुआ, तो उसको बोला ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म. और जब ये एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा बंध गए तो प्रोसीजर आया इकोलॉजी में, को एवोल्यूशन में. इकोलॉजी में ये दोबारा पढ़ाऊंगी, बट आई एम टेलिंग इट फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी इन सिंक विद दीज कॉन्सेप्ट्स. यानी कि इस रिश्ते में इफ देयर इज सम चेंज इन द फ्लावर, द इंसेक्ट चेंजेस इटसेल्फ. Okay, that kind of friendship. For example, you know, when I chose my college, yeah, it was far away from my hometown. I was in north and then I had to come down to the south. So I left my best friend in the north. So she gave the exam 2 years later. Just because I was in the south, I was in Bangalore, she chose her college in Bangalore. पूरा वहां से उसने लोकेशन चेंज किया. क्या हुआ? को-एवोल्यूशन हुआ. ज्योग्राफी मैंने चेंज की, उसने भी चेंज की. That kind of close relationship is called co-evolution. It is seen in yucca. Yucca flower and Pronuba moth. Pronuba moth. White colored flower, moth will get attracted. मैंने तो बोला ही था, सुनते हो नहीं तुम. ये क्या करता है? This Pronuba moth goes inside the ovary. ओवरी के अंदर क्या होते हैं? लोक्यूल्स होते हैं. सुनी सुनाई बात है. चेम्बर्स होते हैं. ओव्यूल्स के लिए यार लोक्यूल्स होते हैं, चेम्बर्स होते हैं. इट गोज एंड लेज इट्स एग्स इन द लोक्यूल्स. और वो एग्स में लावा विल फीड ऑन द डेवलपिंग सीड्स. ओव्यूल्स बोले तो सीड्स. कॉमन सेंस. तो ओके. और जब लावा डेवलप हो जाता है तो ही प्लांट के सीड्स भी डेवलप होते हैं. इतना इनका जन्म का. एंड ecologists have said this has been happening since millions of years and they have not left each other. There is no other pollinator for yucca flower, there is no other flower for moth. Life cycle नहीं complete होता है अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं. It's been millions of years. I was reading some article on the same topic. Yeah? इकोलॉजी में हम दोबारा करेंगे.
अब ये जो ऑर्किड्स की स्टोरी है ना यार, ये ज्यादा हो जाएगा. आई टीच यू इन इकोलॉजी. लेट्स सी द चैट बॉक्स. मैंने लिख तो लिया था, आई वाज जस्ट स्क्रिबलिंग. या द स्टोरीज. ऑर्किड्स में इट्स नॉट अ गुड थिंग. इट्स कॉल्ड सेक्सुअल डिसीट. सेक्सुअल डिसीट. ऑलराइट, we'll study that in ecology. उसके बाद आती है ornithophyly. Ritika is saying, you know, ma'am, I used to hate botany, but after attending your lectures, I started loving it. Thank you so much and your team. Thank you, Ritika. That's the aim of my life. That's what I live for. Thank you so much. You made my evening. मैम आप बोर्ड पे लिखकर पढ़ाओ. बेटा ये बोर्ड ही तो है. This is the board only. उस पर ध्यान दो जो है. Uzair, same with my mom. I also have a lot of plants in my house. That's good. That reminds you of nature constantly. पल्लवी, what a beautiful doubt यार. मुझे ना ऐसी innocent सी confusions बड़ी प्यारी लगती हैं तुम्हारी. पल्लवी, share the session because the kind of doubt you've asked, all the children on the planet should benefit from it. क्या अनुराधा, व्हाट? मैम यू डीपीपी कभी शुरू करेगा? बेटा मैं कर चुका हूँ डीपीपी शुरू. टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है डीपीपी रेगुलरली. आर यू अ पार्ट ऑफ दैट माय डियर? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दो. वक्त तो मतलब तुम लोगों की क्लास में ना वक्त रन्स लाइक एनीथिंग. आई हैव सो मच टू टेल यू एंड इट्स सो अमेजिंग टू टीच यू गाइज. बताओ 7:50 हो भी गए. कूलियोज, चलो आगे चलते हैं. ये रहा टेलीग्राम ग्रुप. अनुराधा बेटा, अनुराधा ना, इसको ज्वाइन करो. इसमें डीपीपी रेगुलरली मिल जाएगा. हाँ जी आशीष, यू गॉट इट. somebody had asked a beautiful doubt of viola. बेटा viola has chasmogamous flowers also. बोले तो open flowers also. Time is like sand. Wow, so poetic. क्या बात बोली है. Okay, bye now. Ornithophyly. यार ornitho बोले तो ये ना ज्यादा कॉमन नहीं है. Ornithophyly is not very common. Common is बोले तो entomophily. एक क्वेश्चन जो मेरे फेवरेट है प्रीवियस ईयर से, मैक्सिमम नेक्टर इज प्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स? तो ऑर्निथोफिली. ऑर्निथोफिली विल प्रोड्यूस मच मोर नेक्टर देन एंटोमोफिली. सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन बर्ड्स के लिए ऑर्डर डजंट मैटर. सो दीज आर ऑर्डरलेस. ये कहीं नहीं लिखा है. मोस्टली बुक्स में, स्टडी मटेरियल में ये नहीं लिखा है. आपको ये बात पता होनी चाहिए. ऑर्निथोफिली और एंटोमोफिली में ये फर्क है. रिवॉर्ड सेम रहेंगे, लेकिन बर्ड की बॉडी बड़ी. द बर्ड्स बॉडी इज लार्जर. अमाउंट ऑफ नेक्टर मोर, अमाउंट ऑफ फूड मोर, पॉलन ग्रेन्स मोर. इनफैक्ट हमिंग बर्ड एक दिन में इतना नेक्टर पी जाता है कि उसकी बॉडी की शुगर रिक्वायरमेंट आधी से ज्यादा पूरी हो जाती है. ओके, तो यूजुअली ये जो हमिंग बर्ड इज द मोस्ट कॉमन. ये भी क्वेश्चन आ जाता है. हमारे इंडिया में नहीं है इतना हमिंग बर्ड. हमारे इंडिया में फिर काम चलाना पड़ता है तोते से, क्रो से, बलबिल से. ओके पीपल, तो क्या ये आपको बताने की जरूरत है कि क्योंकि इनको, बिकॉज दे हैव टू गो डीप इनटू द करोला, वहीं पे नेक्टर ग्लैंड्स हैं. देयर बीक्स आर लॉन्ग. ओके, लॉन्ग बीक्ड बर्ड्स होते हैं ये. ओके, अच्छा, देयर आर वेरियस शेप्स ऑफ द करोला इन दिस केस. मोस्टली दीज करोला आर ट्यूबुलर इन शेप. वैसे कई शेप्स होती हैं, but the most common one is the tubular corolla, and the bird comes and puts its beak into the tube and sucks the nectar. Party time. Example is silk cotton, bombax. Previous year question मैंने नहीं बनाया है, मेरा इस पे कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा बता रही हूँ. कैलिस्टमॉन ये मेरा है बिकॉज ये मुझे सदियों से याद है. बॉटल ब्रश प्लांट फ्लावर.
बॉटल ब्रश बोले तो इस तरह का, हाँ, कैलिस्टेमॉन. And lobelia is not a very common, but you can remember these 2-3 examples. Cool. There's nothing much to tell you in this. उसके बाद funnel shaped corolla is a previous year question. अच्छा, इसमें ना फ्रक्टोज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. फ्रक्टोज कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है in this birds like the fruity fructose sugar वाला nectar. ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स ऑर्डर कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो ध्यान रखना. कूल. उसके बाद उससे भी अनकॉमन आती है कायरोटेरोफिली. कायरोटेरोफिली बोले तो बैट पॉलिनेशन. अगर बैट पॉलिनेशन है तो रात को होगी, मानित, इट विल हैपन इन द नाइट. और बैट बेचारे को क्या कलर से लेना देना. सो दीज आर डल कलर्ड फ्लावर्स. देख ही नहीं सकता वो डल फ्लावर्स, लेकिन दे हैव अ वेरी फर्मेंटेड फ्रूटी. जैसे ही टर्म दिखे ना, ऐसे पॉइंट्स निकलने चाहिए माइंड से. इट विल हैपन ओवर टाइम, इट विल नॉट हैपन ऑन द फर्स्ट डे. अच्छा, दिस बैट है तो इट कैन ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स फॉर किलोमीटर्स, फॉर ह्यूज डिस्टेंस. ये तो कहने की बात है ही नहीं. अच्छा, कुछ ही प्लांट्स हैं जो बैट पॉलिनेशन करते हैं. अगेव है, कॉमन एग्जाम्पल है एंथोसिफेलस कदम ट्री, एडेंसोनिया. दीज आर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स. मैंने नहीं बनाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. एडेंसोनिया एंड एंथोसिफेलस याद रख लो, बहुत है. दीज टू ओनली. डन. Dull colored, told you. Large and stout flowers, of course. Bat is huge, strong. अच्छा यार, I have been to places, but you have to stop and observe. किसी भी, you visit any place. If there's any jungle area near your house, कोई थोड़ा outskirts पे है ना, you will see a bat pollinating the flowers रात को. But you have to wait, stand, observe, be with the nature. Away from the chat section, away from the phone, Facebook and all that. So do that. It's quite endearing. So strong fermenting fruity smell, abundant pollens and nectar for the bat. अब हम करेंगे advantages and disadvantages of cross pollination. तो हर क्लास में let's see the chat box. आंसर तुम दोगे, मैं तो नहीं दूंगी. मुझे तो पता ही नहीं है what are the advantages of cross pollination. यशवंत, मैं मारूंगी. दीपादित्य बेटा वो है, फाइंड इट आउट. हाय उमा. Okay, somebody, finally. Ritika, आशीष, सीमा, one at a time. जो मुझे बहुमत से आंसर मिल रहा है वो है कि मैम वेरिएशंस आएंगी क्रॉस पॉलिनेशन से, तो इवोल्यूशन होगी. जो तुम कहोगे वही मैं पढ़ाऊंगी. आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. नॉट हैपनिंग. दैट इज द डिफरेंस हियर इन माय क्लासेस. मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगी हर चीज में. खुद सोचो, कॉमन सेंस यूज करो. Very good. Genetic recombination happens. So what happens as a result of it? Actually सब इसी का ही result है. अच्छा, this is very important for board exam. फिर मत कहना मुझे नहीं पता था. Thank you राजेश. Variable number of seeds. Okay. हाँ, वो variation लिखा ना बेटा. Gene mutation will occur. Okay. Crossing over. होमोजाइगस. हाँ, सारी जेनेटिक्स पढ़ा दो यहीं पे. सारा कुछ मुझे जेनेटिक्स समझाने लग जाओगे, है ना. थैंक यू पल्लवी, गॉड ब्लेस यू यार. अडेप्टेबिलिटी मैंने पिछली क्लास में ये बताया, ऑलरेडी बताया. दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग रेगुलर टू द क्लासेस. यू बिकम स्मार्टर. थैंक यू अनुराधा, सो स्वीट.
Thank you so much, darling. Okay. Thank you, Anshuraj. Anshuraj is saying it prevents inbreeding depression. सचिन बेटे वही बात मैं डिसएडवांटेज नहीं पूछ रही हूँ बच्चा, आई एम आस्किंग एडवांटेजेस. Okay, people, you've given good points. Pallavi so far has given the best point. She has spoken about the consequence. Because of these variations, genetic recombination, agreed. What happens is the future generation becomes more well adapted to the environment, less diseases. And sometimes they develop good characters. Okay, तो चलो ये सारी बात हो गई. अब हम जाएंगे किताब पे. जाना तो पड़ेगा ही ना किताब पे. तो किताब ये बोलती है, जो तुमने मुझे बताया वही बताती है. इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस, यू टोल्ड मी दिस. वेरिएशंस होने की वजह से कॉन्सिक्वेंस. देखो, जिस तरह से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं ना, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा. और हर बच्चे का, तुम किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, जब तक तुम रटना नहीं छोड़ोगे तब तक कहानी खत्म है. देखो, जब पेशेंट आता है ना ऑपरेशन थिएटर में, जब तुम्हारे सामने केस आएगा ना, तो पेशेंट विल नेवर टेल यू व्हाट इज इन द टेक्स्ट बुक. देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन हाउ टू क्योर द पर्सन. एवरी केस, एवरी बॉडी विल बी डिफरेंट. दैट इज व्हाट इट इज. यू हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, द कॉन्सेप्ट. तो वेरिएशन का कॉन्सिक्वेंस है हाई यील्ड, मोर रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, मोर अडेप्टेबिलिटी. और कभी कभी पेरेंट्स के डिफेक्टिव, एक पेरेंट में कोई डिफेक्टिव कैरेक्टर है लेकिन दूसरा पेरेंट इज विद सुपीरियर कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर, काफी जेनेटिक्स के महाज्ञानी है क्लास में. तो व्हाट विल हैपन, रीप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव कैरेक्टर्स विद सूटेबल कैरेक्टर्स. और प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड यूजफुल वेराइटीज कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज वी हैव अ चांस, वी हैव अ डाइवर्सिटी ऑफ पेरेंट्स विद मी. अब अगर किसी को एडवांटेजेस समझ में आ जाते हैं तो उसको डिसएडवांटेजेस रटने की मशक्कत नहीं करनी चाहिए. दे आर क्वाइट रिलेटेड. लेट्स सी द चैट बॉक्स. डिसएडवांटेजेस मुझे तो पता नहीं है, आई नो नथिंग. सो यू विल टेल मी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. मेरी क्लास हमेशा ही लंबी होती है. जल्दी फटाफट बताओ, फटाफट. Ritika again has given. She said undesirable character will come off. Okay, and she has explained it quite suitably. कह रही है कि अगर एक पेरेंट में अनडिजायरेबल कैरेक्टर है तो, और वो डोमिनेंट भी है, आएगा वो. राजेश, so glad to hear that, बेटे. Share the session with everybody who is preparing. Let's spread the love. Okay, factor of chance. Pallavi is saying there is chance factor. Beautiful. Pallavi again has given a superb answer. I want more and more people. Purity खत्म हो रही है. दीपादित्य ने बोला है प्योरिटी खत्म हो रही है. रजनीकांत, likewise, बच्चे, share the session, be a part of the channel regularly. Maybe put your name also. I saw your message. Palak is saying there's loss of pollen grains. Palak is saying there is wastage of pollen grains. I can't be happier. You guys are so lovely, so wise, so intelligent. Pallavi, yeah, got it. Pallavi is saying good characters might be lost. गुड कैरेक्टर्स आर लॉस्ट. ठीक है भाई, और क्या चूज करें. राजन, यू आर राइट. हाँ, वंश ने भी काफी वैलिड पॉइंट. उसने बोला यार यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. अच्छा, एडवांटेजेस में एक पॉइंट ऐड करते हैं. व्हाइल यू वर टॉकिंग मेरे दिमाग में एक और बात आई. बॉयज एंड गर्ल्स, कुड यू जस्ट गो बैक टू दिस वन, this one, advantages of pollination, cross pollination. Self sterile plants have only this way.
जो प्लांट्स एक अपने ही पॉलन ग्रेन के लिए स्टेराइल हैं, या द पॉलिनेशन कैन नॉट हैपन इन द सेम फ्लावर, उसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी. स्टेराइल फॉर द ओन पॉलन ग्रेन, ओन एग. उनके पास एक ही मेथड है. सौरभ विल कीप इट ऑन. ओके, अच्छा, you've given me enough points. All of you will score 100% marks if this question comes in your boards or anything. Anyway, so let's discuss the points once again. There is factor of chance. What do I tell you? You only told me कि इसमें because there is a agent of pollination, हो सकता है insect जाए ही नहीं. So chance factor is a huge problem. और प्लांट को ये बात पता है क्योंकि प्लांट के पास क्या है? दिमाग है. तो इस चक्कर में द प्लांट हैज टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ पॉलन ग्रेन्स. तो खर्चा हुआ. ओके, सो लॉट ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, हाईली वेस्टफुल, लॉट्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स. Then Pallavi said it again and again. She was trying to tell you कि भाई, again the thing, two parents are involved. What if one of the parent introduces a bad character? Entire progeny carries the bad character, और उस चक्कर में good characters over the generations might be lost. Cool, happy? चलो, अब अगली क्लास में we'll end the class here. अगली क्लास में we'll start the class with outbreeding devices. In the last class, we studied inbreeding devices. Agli class mein we'll study outbreeding devices. Super, super important for NEET MCQs. Please be regular to the classes. I know you enjoy the classes, so be regular. Make your schedule like that. And keep smiling, bachon. Take care of your health. Stay happy. Thank you, Palak. Lots of love to you. Rosa, absolutely. So, have a good sleep. Eat well. Eat healthy. And take care of yourself. Anything, any concerns you have, yeah, write it for me. Whatever you want, whatever concerns, I am here for you. Pakka se. Okay, bye-bye. Thank you, Palak. Thank you, Anuradha. Dipaditya, that was great. Good, good, good. Okay, Yashwant, I'm watching you. Chalo, bye.